My next question is to you. Okay. Now I know अभी तू इतने मैचेस खेला है, इतना एक्सपीरियंस हो गया खेलने का, और जो एक बोलते हैं ना जब टेबल पे आता है तो अपार्ट फ्रॉम जो प्लानिंग होता है, स्ट्रेटेजी प्लानिंग, और जो स्पॉन्टेनियस थिंकिंग होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक इमोशनल काफी थॉट्स आते रहते हैं. दोज इमोशनल थॉट्स आर पॉजिटिव ऑल्सो, नेगेटिव ऑल्सो. So we will talk little about the negative emotional thoughts, that is stress or फिर anxiety or etc. So I know ये तूने काफी कंट्रोल किया है, बट पहले आते थे या फिर अभी भी इंडिया टीम के लिए जब तू खेलता है अगेंस्ट चाइनीज और कोरियन, तो तुझे डेफिनेटली ऐसे इमोशंस आते रहेंगे. तो ये काफी प्लेयर्स को आते हैं, और ये कहीं ना कहीं जब मैचेस चलता है तो ये इमोशंस को वो कंट्रोल नहीं कर पाते और इसको ओवरकम नहीं कर पाते. और और उसका ये मेन रीजन होता है, मतलब प्रैक्टिस बहुत अच्छा कर लेंगे, सब कुछ अच्छा चलेगा, जब मैच में आ रहे 9 ऑल का सिचुएशन है, 10 ऑल का सिचुएशन है, तब बिकॉज ये सब इमोशंस आते हैं, इसलिए गेम काफी चेंज हो जाता है. तो तेरा पर्सनल इसमें क्या स्ट्रेटेजी रहा है, एंड हाउ डू यू टैकल दीज इमोशंस लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी, हाइपरनेस and stiffness or feeling heavy during the matches? Yes. I would like to say कि to feel tensed or to stiffness, it's very normal. मतलब वो human हो और match खेल रहे 9 all match, Chinese हो, Malang हो, anyone for that matter will feel stiffness. So you're trying to resist it. If you're trying to resist it, that's not going to help. So you'll have to let it come to you. मतलब accept it and let it go. So that is how you deal with it. So negative thoughts को आने देना चाहिए. Then you have to let it go and try to come out fresh, empty. So that is how positive thoughts come in. So you have to come out of the negative thoughts and then again think positive. So I would like to give an example on how I used to this muscle stiffness. So when I worked with the mental conditioning coach, he also told me like the muscle stiffness is something which is bound to happen. So why we get tensed in the match is because we come to a situation where we have never faced. And all हो रहा है, muscle अचानक tension हो रहा है और पता नहीं how to deal with it. So what it will become easier, then you call it experience. So that is what I used to do. So before a match, I used to just sit down in a place. Imagine I'm playing like a 9 all or 8 all. I janpooch ke stiff my muscles. So stiff my upper body. I stiff my hands. I stiff my legs. And I imagine us moving. And then again, slowly let it go. So I think if you are able to get used to this feeling of stiffness and letting go, then it becomes much more easier in the match. So then when you come across a situation where the muscles are getting tight, you are aware of it and then you let it go. So I think that is very important. You'll have to accept it. And then you go into the, of course, above all this, you'll have to have a clear strategy. And then you, like you said, then you go into the strategy and plan A. Then if you're thinking about only on how to deal with the process, the match tension or the score will definitely not hinder you. And I think that is how I have prepared myself, that to accept the pressure, to accept everything and see why you are under pressure. You're under pressure because pressure is a privilege. Like I always said, you're good and that's why the pressure is coming. So believe you're good and let go of the negative thoughts. Prepare like that in a match, before the match, and then you can definitely deal with these kind of things. Okay, so basically it's a type of an exercise. It's nothing to do with, just to feel good factor kind of a thing. So you have to actually prepare for it. एक exercise सबके लिए होता है. प्रिपेयर करना पड़ता है. मतलब जैसे मैं एग्जाम का भी बोलता हूँ, पढ़ाई जब करते हो तुम जाके सीधा Okay. एग्जाम में तो कुछ लिख नहीं सकते. तुमने जो पढ़ाई किया है वो याद करने का यू कैन डू एक्सरसाइजेस, बट एग्जाम में so you can study, you can have, I can give you मतलब techniques how to remember things जाके एग्जाम में लिखना, but you'll have to prepare for yourself. You'll have to do the practice, you'll have to do things. Then probably when you do more of this muscle stiffness exercises, you can go मैच में जाके याद आएगा कि मैंने किया है तो कर सकते हैं. लेकिन आपने किया ही नहीं जाके मैच में, if you just try to do everything, then not gonna work. Okay, super Sathiyan. So I have a point yes. to add. Can I add something? Yes, Divya, definitely. Go You ahead. can. Yeah. Since I can see a lot of kids here अभी, तो जो सत्यन ने बोला that is really amazing and एकदम perfectly उसने बताया है. For youngsters, for kids, actually ये थोड़ा मुझे लगता है difficult हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कैसे है उनको, when they are playing a match, they are totally dependent on the coach, as in they get their confidence या जो positivity भी बोलते हैं वो coach से मिलता है.
तो हियर आई वांट टू ऐड वन थिंग कि यहाँ जो किड्स को स्पेशली इज इम्पोर्टेंट कि उनके पेरेंट्स हो या वो कोच हो, उनकी तरफ हम्म, से ये एक बात जाना कि अगर ऐसी चीज हो रही है, इफ यू आर फीलिंग स्टिफ और इफ यू आर नर्वस और हम्म, टेंशन आ रहा है बहुत, तो इट इज फाइन, इट्स ओके। हम्म, तो ये जो बात है ना, ये बात बोलनी बहुत जरूरी है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, इफ द कोच और इवन द पेरेंट रिएक्ट्स इन अ डिफरेंट मैनर, तो किड्स हम्म, और भी थोड़े और भी ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं और भी नर्वस हो जाते हैं, एंड देन वी हैव सीन सो मेनी टाइम्स कि वहां पे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, देन दे स्टार्ट क्राइंग ऑन द टेबल। सो वो जो एक कॉन्फिडेंस है किड्स को अपने कोच के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर, दे शुड बी एबल हम्म, टू शेयर दिस विद देम, कि मतलब डरना नहीं चाहिए, दे शुडंट बी स्कैर्ड टू शेयर दिस, मुझे टेंशन आ रहा है तो अब मैं कैसे बोलूं उनको, वो क्या ओके, बोलेंगे, दिस फैक्टर शुड नॉट बी देयर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो दोनों का जो बॉन्ड है, कोच का और प्लेयर का या पेरेंट का और प्लेयर का, आफ्टर द मैच या बिफोर द मैच, जो भी वो बात करेंगे एक दूसरे के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रॉपर एनकरेजमेंट एंड द प्रॉपर पॉजिटिव एनकरेजमेंट इज वेरी नेसेसरी फ्रॉम देम टू द किड्स। ओके, सो राइट, तो ये शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने अंदर मत रखो, आई थिंक दैट वुड क्रिएट मोर इमोशंस एग्जैक्टली। एंड मोर नेगेटिव इफेक्ट ऑन योरसेल्फ। तो ये रिलीज करना, एनर्जी कहीं ना कहीं रिलीज करना पड़ता है, तो ये एनर्जी रिलीज होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स या कोच के साथ आप क्या फील कर रहे हो तो उस हिसाब से प्लान कर शेयर सकते हैं। करना तो या थैंक यू, यस जीगा, थैंक यू सो मच फॉर द एक्सप्लेनेशन। ओके।